लाइव होने वाला है। बस 1 मिनट। लाइव हो गया। ओके। या सो हेलो एवरीवन, आज के हम इस सेशन में आज बात करेंगे कि हम कैसे आप कोई भी ईएसपी डिवाइस या इंडस बोर्ड, इस प्रकार के इंडस बोर्ड डिवाइस को हम इसके अंदर के फार्मेट विदाउट एनी प्रोग्रामिंग इसके अंदर के फार्मेट को अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी कनेक्शन, और विदाउट री अपलोडिंग द कोड, विदाउट रीप्रोग्रामिंग द कोड। रीप्रोग्रामिंग हम इसको कैसे, मतलब इसके अंदर के वाईफाई क्रीडेंशियल को विदाउट री कोडिंग और री अपलोडिंग द कोड हम इसके मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम वाईफाई मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम इसको वायरलेसली प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इन सब सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके लिए हम जो आज सिस्टम जो यूज करेंगे उसको हम कहते हैं वाईफाई ऑटो कनेक्ट। और भी बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, जो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो आज जो तरीका हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे वाईफाई ऑटो कनेक्ट। एक और भी सिस्टम है जिसको कि हम वाईफाई मैनेजमेंट मैनेजर भी कहते हैं। वो लाइब्रेरी को भी यूज करके हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आपने बहुत सारे बल्ब देखे होंगे, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट लाइट, ये सब में क्या होता है कि आपको मतलब वो देते हैं आपको। जब जब लाइट देते हैं तो आपके पास वो लाइट आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है। फिर उस कनेक्शन के बाद आपको बेबी यूआई मिलता है, जिसमें कि आप उसके क्रीडेंशियल को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस यही चीज हमें ये अनेबल कर देता है। तो हम इसी चीज को आज हम देखें कि हम कैसे बना सकते हैं। ओके। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेमो की कैसा हमारा ये सिस्टम दिखेगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, where is the share screen? या सो अभी आपको जैसे कि हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अभी हमारा ये डिवाइस है, इंडस बोर्ड डिवाइस। और मैं आपको एक वीडियो, इसका डेमो वीडियो एक बता देता हूँ प्ले करके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं गया, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि हमारा ये फोन में आपका हॉटस्पॉट अपने आप आ जाएगा। ये हमारा हॉटस्पॉट का काम करेगा। हमारा जो इंडस बोर्ड कॉइन है, ये जो है हमारा इंडस बोर्ड कॉइन, ये हॉटस्पॉट का काम करेगा। और इसके बाद हम इस कॉइन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देखो इंडस बोर्ड कॉइन, इसको आप पासवर्ड रख भी सकते हो, पासवर्ड नहीं भी रख सकते हो। यहाँ पर हम पासवर्ड रख रहे हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड। तो ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है इस आईफोन का कि वो दिखाता नहीं पासवर्ड। तो ये हमारा इंडस बोर्ड क्वाइन से कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा इंडस बोर्ड क्वाइन से कनेक्ट होने के बाद हमें इस प्रकार का ऑटोमेटिकली, जैसे ही कनेक्ट होगा, हमारा ऑटोमेटिकली इंडस बोर्ड क्वाइन का एक यूआई खुल जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है वाईफाई मैनेजमेंट। तो इस यूआई में हम इसको रीसेट कर सकते हैं, इसके फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, ये इसका सिग्नल स्ट्रेंथ के सारे सेटिंग्स देख सकते हैं, इस इंडस बोर्ड के पूरे बोर्ड के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, और साथ में इसके वाईफाई को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अब जब हम ये फायरवेल डाल देंगे, हम इस इंडस पोर्ट कॉइन में जब हम ये फायरवेल डाल देंगे, जब हमारे इंडस पोर्ट कॉइन में ये वाला फायरवेल चला जाएगा, जब इसमें अपलोड हो जाएगा, तब हम इसको वाईफाई को विदाउट, जैसे कि हम हमें सपोर्टेड कुछ हमने कोई सिस्टम बनाया, तो अब अभी उसका आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है। और फिर बाद में हमें किसी और वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई ये क्रीडेंशियल्स पे हम कनेक्ट करना है, तो उसे बार बार चेंज करना पड़ता है, आपको री अपलोड करना पड़ता है कोड। ये सिस्टम से ऐसा आपका इजी हो जाएगा और री अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो जब मैं इस कॉन्फ़िगर वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो हमें एक यूआई मिल जाएगा एसएसआईडी या पासवर्ड का।
तो ये सिमिलर है आपके वाईफाई राउटर के जैसा। आपके वाईफाई राउटर में भी एक इस प्रकार का यूआई खुलता है एडमिन, जिसमें आप पासवर्ड डालते हो, फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो कौन कनेक्ट कर सकता है कौन नहीं। और उसी टाइप का है। तो आप अपने यहाँ पे एसएसआईडी पासवर्ड जो भी जिस भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर दो, सेव कर दोगे, तो वो उस वाईफाई नेटवर्क पे हमारा ये इंडस बोट कॉइन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमें इस इंडस बोट कॉइन को किसी और वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, तो हम इसी प्रकार से इसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट होकर के इसको किसी और हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे जो हमारे इंडस बोर्ड कॉइन है, ये जो हमारा इंडस बोर्ड कॉइन है, एएसपी बेस्ड जो भी बोर्ड है, ये दोनों दोनों मोड में काम कर रहा है, एपी मोड में भी और एसटीए मोड में भी, दोनों मोड एक साथ हो रहे हैं। तो एसटीए मोड में क्या है, ये हॉटस्पॉट की तरह काम कर रहा है, और ये हमें अब यूआई इंटरफेस दे देता है फोन पे ही। और उससे उस इंटरफेस पे जाकर के, इस प्रकार का इंटरफेस पे जाकर के हम अपने वाईफाई नेटवर्क, जैसे लैपटॉप का, फोन का हॉटस्पॉट, या फिर वो घर का राउटर है, किसी और का राउटर का, हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एसएसआईडी पासवर्ड, और इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसा कि आपको स्मार्ट बल्ब में इस प्रकार का एलेक्सा बेस्ड स्मार्ट बल्ब या स्मार्ट लाइट और बाकी सारे सिस्टम में आपको मिलता है कि जब वो फैक्ट्री से देते हैं, तो वो प्री प्रोग्राम्ड कोड नहीं, वो प्री प्रोग्राम्ड ये नहीं रहता है, मतलब एसएसआईडी पासवर्ड की आपका मतलब उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो, आपको एक यूआई मिलता है जिससे कि आप सेट करते हो कि हमारा इस नेटवर्क से कनेक्ट हो, तब वो डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम से, वाईफाई मैनेजमेंट के सिस्टम से हम ऐसे से आईओटी डिवाइसेस बना सकते हैं, आप आईओटी बल्ब बना सकते हैं। तो जो कि अगले मैं इसी के नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार कैसे एक एलेक्सा अनेबल्ड और गूगल असिस्टेंट अनेबल्ड खुद का एक पूरा बल्ब डिजाइन कर सकते हो इस इंडस बोर्ड कॉइन के ऊपर, और उसे मतलब उसका पूरा पीसीबी टू एवरीथिंग आपको मैं बताऊंगा। आरजीबी बल्ब जो आप देखते हो मार्केट में अलग अलग, और खुद का कैसे स्मार्ट स्विचेस डिजाइन कर सकते हो, वो सब मैं बताऊंगा। बट आज के सिंपली मैं आपको ये बता दूं, ये एक सिंपल सा सिस्टम वाले है ये। इसका भी हमारे पास एक एडवांस सिस्टम है, जो कि ये है, ये वाले ऑटो कनेक्ट। इसमें क्या होगा कि अब हमारा ये जो इंडस बोर्ड कॉइन है, इसका हम सिर्फ वाईफाई को मैनेज नहीं कर सकते हैं विदाउट कोडिंग। हम वाईफाई को इसका बार बार पासवर्ड और एसएसआईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो होगा ही, उसके साथ में आपको इस बोर्ड के सेंसर डेटा को भी देगा रियल टाइम में। इस बोर्ड का और भी बहुत सारे फंक्शंस को आपको रियल टाइम में बताएगा, और भी बहुत सारे सेटिंग्स आपको देगा। और इसको आप वायरलेसली प्रोग्राम कर सकते हो, या आपको इसको बार बार यूएसबी से कनेक्ट करके प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। इसमें ओवर टू एयर प्रोग्रामिंग सपोर्ट है। तो इसमें आपको क्या होगा, वाईफाई मैनेजमेंट के थ्रू आप जैसे कि यदि आप ओवर टू एयर प्रोग्राम बाकी सभी आपने ऑलरेडी देखा होगा, या फिर बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि जिसमें आप ओवर टू ओवर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ओवर टू एयर प्रोग्रामिंग आप करते क्या हो कि आप एक एसएसआईडी से सिलेक्ट पहले से कोड में आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो कि आपका बोर्ड इस एसएसआईडी से कनेक्ट होगा, उसका ये पासवर्ड है। आपका हमेशा बोर्ड उसी एसएसआईडी से कनेक्ट होता है, और उसी एसएसआईडी पे आपका लैपटॉप को भी कनेक्ट करके प्रोग्राम करना पड़ता है। आपको वो चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना है तो फिर से कोड अपलोड करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो हमारा ओटीए सिस्टम जो बनेगा, जो वो एडवांस ओटीए सिस्टम बनेगा, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो खुद से विदाउट रीकोडिंग, और अपलोड कर सकते हो वायरलेसली, प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो ये सारे सिस्टम आपका होगा। तो उसका मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ। तो ये रहा, हम अपना इंडस बोर्ड क्वाइन में हमने डाल रखा है। तो ये देखो, मैं अपना इंडस बोर्ड क्वाइन को यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। ओके। तो अभी हमारा ये इंडस बोर्ड क्वाइन कनेक्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मिरर दिखा रहा है, आपका मतलब ये उल्टा हो जा रहा है। आई डोंट नो, कैमरा में शायद उल्टा हो जा रहा है। पर मैं यहाँ पे आप करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया इंडस बोर्ड। अब ये इंडस बोर्ड देखो, आपका मेरे पास हॉटस्पॉट आ गया ना, इंडस बोर्ड ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ गया। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये हमारा वेब इंटरफेस खुल गया। ये देखो, इस बोर्ड का पूरा डिटेल्स हमें इस फोन पे आ गया, इस फैनवेयर में। ये देखो, और सिर्फ इस बोर्ड का, सिर्फ ये इसका चिप, इसका कितना आईपी एड्रेस है, सारे डिटेल्स सिर्फ बोर्ड का, वो वाले डिटेल्स सिर्फ नहीं आ रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा होम पे, यहाँ पे एक होम का ऑप्शन है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इसका सेंसर का भी डाटा हमें रियल टाइम में आ रहा है। ये देखो, इसका सेंसर का भी डाटा हमें रियल टाइम में वायरलेसली इस फोन पे मिल रहा है। अब इसके वाईफाई मैनेजमेंट को देखो, अब इसमें हमें वाईफाई मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, जैसे कॉन्फ़िगर एपी। अब यहाँ पे मैं इसके एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि ये किस किस नाम से ये मतलब ये होगा। और यहाँ पे मैं एसएसआईडी पासवर्ड जो भी सिलेक्ट करूंगा, वो ये इसका एक्सेस पॉइंट वो चेंज हो जाएगा। और ओपन एसएसआईडी, यहाँ पे मैं ओपन एसएसआईडी पे करूंगा, तो जो भी एसएसआईडी पासवर्ड, जो भी वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड इसमें सेव है, जिससे पहले कनेक्ट हुआ है,
वो इसको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसको रीसेट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट का। अभी मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये देखो ओटीए अपडेट आपको दिख रहा है, ओवर टू एयर अपडेट। अभी मैं जो भी प्रोग्राम लिखा हूँ उसका उसका एक्सपोर्ट करके, जैसे कि ये हमारा कोड है, अभी इसके बिन फाइल को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। इस कंपाइल्ड बाइनरी को सिंपली यहाँ पर चूज करके मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इस डिवाइस में यहाँ पे मैं चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे अपडेट मार दूंगा। तो ये बोर्ड विदाउट, ये कहीं पर भी रहे, मतलब मेरे रूम में, ये जरूरी नहीं मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड रहे, मैं डायरेक्टली उस फाइल को यहाँ पे चूज करके अपलोड करूंगा तो ये वायरलेसली प्रोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बोर्ड वायरलेसली प्रोग्राम भी हो रहा है, इसमें हमारा उसको सेंसर का डाटा को भी दे रहा है, यहाँ पे होम पे सेंसर पे का डाटा को भी देते रहेगा। और साथ में यहाँ पे कॉन्फ़िगर एपी का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आप एसएसआईडी, किस एसएसआईडी से कनेक्ट करना है, किस किस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है इसका वाईफाई का, विदाउट कोड को री अपलोड किए इसका वाईफाई को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये पूरा एडवांस सिस्टम आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे मिरर हो रहा है तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपने आईफोन को यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आईफोन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो सही ढंग से वो हो नहीं पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, इस फ़ोन के वाईफाई को, और यहाँ पे मैं अपने आईफोन से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं इधर के जो हमारा जो लाइव वीडियो आ रहा था ये बंद हो जाएगा और हमारा आईफोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको इधर अच्छी सही से नज़र आएगा। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, इसके वाईफाई के सेटिंग कहाँ गया, सेटिंग में कैसे खोलूँगा इसका, हाँ यहाँ से मैं सेटिंग पे गया। अभी मैं यहाँ पे वाईफाई का देखो आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे मैं वाईफाई स्कैन करूंगा, यहाँ पे देखो इंडस बोर्ड आ रहा है, इंडस बोर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑल ऑफ यू यू कैन कमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यू यू कैन कमेंट इट आउट, इज इट विजिबल और नॉट करेक्टली, यू कैन गिव अस द फीडबैक। सो हेयर इंडस बोर्ड, यू कैन सी आई कैन कनेक्ट इट यूजिंग हेयर, नाउ इट्स कनेक्टेड। So it is going to connect, this phone is going to connect with the Indus board coin. Now I open the Safari. How do I open? Yeah, here. So I refresh this page. I am going to refresh this page. Yeah. So I am going to refresh this page. So it might be create little bit of lag or problem because it is connecting to the triple Wi-Fi. It is once it is connecting with my laptop, the phone is connecting with my laptop. The phone is also connecting with the iPod, this video as well. So it might be create conflict. Let me check it will able to do it or not. Yeah. So this is the problem, yeah, happening here. So yeah, 1 minute. Let me try once again. So it's connected. How do I reopen it? Okay, let me show you like this. 1 minute. Let me show you the setting like this. Here, like this. I will show you like this. So you have to see here this screen. Here it will also get mirrored. I don't know why it get mirrored. So yeah, so you will get the option like that. 1 minute. Let me try it again. Let me close this one and then try it. Yeah. So here it is connected. 1 minute. Reconnected. So that phone is connected to a lots of hotspot now, so it's creating problem. It is connecting to the whole laptop and everywhere. Yeah, I have not found. Okay.
Yeah. Yeah, so here you can see when I open the setting, you can see in the Indus board option here. So it is going to connect with the Indus board. I have already set to the password here. So once it get connected with the Indus board, yeah, so here you can see now. So it is showing the every details data of this Indus board coin here. Indus board coin. It's connected to my phone. Its name is Auto Connect and it's connected. Here you can see the Indus board and its IP address and all other details of this Indus board. Now I I have a menu here. So when I click on this menu bar, I have a home page. So when I click on this home page, it will show all the sensor data that it has, this magnetometer, accelerometer, temperature data, and all those data. Okay, here. So now when I go back again, so it is also showing the in this firmware also showing the sensor data, and you can add few more sensor. You can modify the code to add few more sensor. You can modify the code to turn on the light, turn off the light, or a speed. You can modify this code to add few more IoT things. Whatever the things you want to, you can code it. You can modify code. I will give you the firmware. You can modify the code according to that. Okay. Now when I go to the update, so here I will get a over to air update setting. So see, update firmware. There is option na update firmware, choose file, no file selected, update. So if I want to update it wirelessly, so it this board can be kept anywhere in the room. It not need to be connected with the USB. Currently, my phone is connected wirelessly with the Indus board. This Indus board is not connected with the USB of my phone. It's wireless. Okay. So it's the phone. This board is connected to my phone. Okay. This is just for the power thing. Nothing. It's okay. So I can choose the file, any any of the firmware from here. I can choose any firmware. 1 minute. Or what I need to do to upload it wirelessly, I just simply go to the sketch and export compiled binary. So it will compile the code and export the binary file. Then I simply choose that binary file, and when I choose that file and update it here, it get programmed wirelessly. There is no need to for the wireless connection. Just need the power. Anywhere it is connected, it get programmed wirelessly. Okay. So this is how over to air work on this firmware, and it will also showing the real time sensor data as well here. And there is an option to reset the board. So if I want to reset, I can wirelessly reset this board. Okay. So if I want to disconnect this board, I can wirelessly disconnect this board. Okay. If I want to configure the new, if I want this board to connect with the new SSID or password, new Wi-Fi router, a new Wi-Fi connection, then I can simply set, suppose that I want to connect it with my home network now with the Geo fiber. So I simply type Geo, simplify Geo fiber. Now it is connecting to going to connect with my home network. I set the password and then apply. So it get connected with my Geo fiber. So what I do, I do not need to re-upload the code every time and reconfigure the code every time if I want to change the Wi-Fi network or manage the Wi-Fi network in my IoT device. You can do it wirelessly just using your phone. You can, and I can also not only need, I can also not need to connect this board every time with the USB cable and program it using the USB cable. You can program it wirelessly over to air.
So it get connected after if the Wi-Fi is in this range, then it get connected, or you can if you want to rechange the Wi-Fi network to any other SSID, then you can simply go to the setting and then change it. If you want to see the details of this thing, it will giving you details, how many device connected and all other details. If you want to get the sensor data, it's available here. So how you can make this kind of thing. So in today's session, we are going to make same thing. Okay, how the complete over wireless Wi-Fi management system, complete wireless firmware management system. So here is another advanced firmware I have made here. So there are few libraries to do that. One library is called Auto Connect. So if you want to use this kind of facility, that you want to manage the Wi-Fi setting, Wi-Fi credential wirelessly on this Indus board or on any other USB boards, then you can, there are few libraries. One is the Auto Connect. So you have to go to the library manager here and search for Auto Connect. So here is the Auto Connect library, where you can join. You can install it, and then you can use this Auto Connect feature. So currently what I am using is this same library, and there is another very simpler version of it, that is Wi-Fi manager. Wi-Fi manager. So here is the Wi-Fi manager. So using with both of this library, you can get the very advanced feature in any kind of ESP board or in this kind of Indus board client, to manage the Wi-Fi and reconfigure the Wi-Fi settings and connect your boards with different Wi-Fi network, and reconnect it to change the Wi-Fi network and reconnect to any other Wi-Fi networks wirelessly, and you can manage the whole Wi-Fi thing with from your phone, and you don't need to re-upload the code, reconfigure the code every time if you want to change the Wi-Fi network, like in other IoT device and settings. Okay, so this is one thing. Okay, so now this is the more advanced version of that code. So now I am going to upload it. Okay, so in this version, you can also change it to to turn on the LED light, turn off the LED light. So suppose that if you want to make a smart bulb, like what you get in the market, like Panasonic smart bulb, or Wipro a smart bulb, Cisco smart bulb, those smart bulbs. So when you got this smart bulb, what they ask you to connect that plug in that smart bulb, and then that smart bulb will give you the hotspot that you get in the phone. And in that hotspot, when you connect that hotspot of that smart bulb, you can configure the credentials there, your SSID and password there, and then you click on save, and then that smart bulb will connect to your home network router, whatever you set there. And if you want to reset, then you have to do the same thing. You can connect that smartboard with your phone hotspot, and with that your phone with that smartboard hotspot, and then reconfigure the Wi-Fi credentials with the other network, and then you have to connect. So if you want to make such a device, you can do the same thing. You can do it using the Auto Connect. So let me tell you what are the things here I have used. So one is the USB Auto Connect, and whatever the thing that you want to program, you can program there in that Auto Connect code. So here what we have used, it can be this library can be used for the ESP8266, is the lower version of chip, but we have the highest version of the chip, that is the one of the latest one, ESP32S21. So for that architecture, we are going to use the ESP32 architecture, and then we are going to use the web server here for that, and then we are going to use the Auto Connect. So this is just for the Wi-Fi management. Now I have modified this code to get the real-time sensor data, like this real-time sensor data real-time sensor data like this. So it get disconnected. Okay, yeah. So to get the real-time sensor data of the board, like accelerometer, gyroscope, or thermostat data, or anything, or if you want to control the board, you can change the code according to that. But here in this code, I am only using the real-time sensor data update to create a dashboard for that.
So for that, the board has these the two libraries. The board has the sensor that is LSM303, and there is few more sensor also out there. But I am using just accelerometer and magnetometer sensor to update in my real time dashboard. So to act as a IoT sensor that I can reconnect it to any Wi-Fi network and configure the Wi-Fi and firmware of that sensor node. So currently, if I want to make a device that that will monitor the real time accelerator and real time the magnetometer sensing wirelessly, and I can deploy it anywhere, and then I can manage it firmware, and I can manage it Wi-Fi to connect it with my home network whenever I want to change. So this is the device that we are going to make using this Wi-Fi auto connect. So we have imported the Wi-Fi auto connect setting, this library here in this part, and then if we are going to use the inbuilt sensor of this Indus board Quan for the accelerometer magnetometer, we have implemented the STM LSM303 sensor. So I have included that library in the code, and you can need to install that library using the library manager. And then for the OTA, we have to call out the function that is three functions. One is the OTA OTA. 1 minute. OTA receiver. One is the OTA receiver. Then other one is the OTA start, and then one is the OTA on progress and OTA error. So if we send the OTA update new parameter to the device, then it will execute OTA at a start OTA dot start this function, and whatever the OTA over to air parameter, whatever the wireless code you are going to upload, it will check that, and then it will show you the progress using this OTA progress. It will show you the progress, how much code each uploaded. Like what you do in the Arduino, when you plug it the board with the Arduino, and then when you upload the code in the bottom of the Arduino, you can see in this area, you can see that this amount of code get uploaded here. This amount of code have got uploaded, give you the progress. So that the same thing will be show in the UI of this phone that this much of code is get uploaded, whatever the new code I am uploading. And once then it will show you the code is ready. Okay. So this is the basic code. Okay. Now if I want to like I've said, I'm not only using the smart Wi-Fi management and smart the over to air programming. I am also using the smart sensor as well. I'm going to use it as a smart sensor that I can keep it anywhere to monitor the movement, and I can manage its Wi-Fi wirelessly, manage firmware wirelessly as in enterprises. So suppose that someone wants to buy this board, buy the smart sensor. I want to design a smart sensor for some client. Okay, and that need to capture the accelerometer and the movement of the person, and the and walking, and all those different movement data of the body. Then I can simply give this board with the battery and upload this firmware, and using that firmware, I can also manage that the client's firmware wirelessly, and give them update over to a wirelessly, and he can also manage his own Wi-Fi network to whom we want to connect and how we want to connect. So that can be configured. Yeah. So for that, here we are using the accelerometer magnetometer sensor. So I have also made a function named, this is modified code that I have done. This is a modification in the main code that I have done, that the void sensor data. So using this we will update the sensor, and we will get the sensor of accelerometer sensor, temperature sensor, magnetometer sensor. We will get all those sensor data, and then we have the home screen HTML code that will give the real time update of the sensor data, magnetometer, accelerometer, and temperature sensor data, and get updated, and it will send with all to the server with the delay of 200 microseconds. So it get real time update on the web browser that we can see, and then it will call out all those function, and then using the portal dot handle client, it will automatically handle the client. So this all the things get automatically handled using this just single line of code, using the auto connect AUTO connect library. There is another library called Wi-Fi manager library. Here you can see
Wi-Fi manager. So using this, you can also do the same thing. There are lots of example you can get like this. So if you use this piece of code, this piece of library, you can also able to manage the Wi-Fi. But in this library Wi-Fi manager, you can only able to manage the Wi-Fi, and you can only able to update the Wi-Fi credentials, update the Wi-Fi things wirelessly without need of re-uploading the code. But it didn't allow you to wireless firmware upgrade, like not allow you to wireless coding, wireless programming of the Indus coin. So for wireless programming of the Indus coin, you can use with the Wi-Fi management, you can use the autocorrect, this one. And this whole firmware and this whole thing is being uploaded on the Indus website and also on electronsforyou.com in next week. So you can keep checking that, and this whole, you can get this code and modify it as you want. And in the next session we will tell you how you can make your own smart bulb and a smart switch that you can actually been designed for the selling in the market. How you can do that, I will tell you, okay, in next session. Thank you everyone.